Assalamu alaikum guys, this is Lamyaa and welcome back to another video. I hope you all are doing well and आप लोग सब safe होंगे. So guys, in today's video you do have the idea that I'm going back to Sharjah, and in this video I will be sharing my experience of traveling in Airarabia from Karachi to Sharjah. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world. Okay guys, so now I am on my way to the airport, and जैसे ही मैं airport पहुंच रही हूँ, so I will give you a brief view of Karachi airport. And Karachi airport जो है, that is one of the biggest airport in Pakistan. So let me just reach over there and I will show you more. Okay जी guys, so this is the start of the airport. Like once you get the boarding pass and आप अपना लगेज सब चीज़ें चेक इन करवाने के बाद एयरपोर्ट का जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से होती है. एंड फ्रॉम हियर यू विल स्पॉट डिफरेंट ड्यूटी फ्री शॉप. ओके जी गाइस, सो हियर आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स द एयरक्राफ्ट एंड ये सामने है एयरक्राफ्ट एंड इट इज़ बेसिकली एयरबस A320. एंड इसकी जो सीट्स हैं, पैसेंजर सीट्स, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लाइक A320s इन अदर एयरलाइंस, बिकॉज इनके पास जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है. बिकॉज मैंने प्रीवियसली भी ट्रैवल किया हुआ है इस एयरलाइन से, सो आई रियली लाइक देयर सीट्स. So as you can see, there is quite space for your legs. You can have a very comfortable journey over here. And so it was a day flight. The time was around somewhere around 4 o'clock. So everything was done, and this is a safety demo was going on, because यहाँ पर जो है it is like as a video they show you. Usually जो होता है कि like जो cabin crew होता है वो safety demo perform भी करता है. Okay ji guys, so the pushback has been done by this engineer I think, and this is basically a procedure. It is for to move the aircraft away from the gate, so ताकि जो फिर जो टैक्सी है आगे टेक ऑफ है वो सारी चीज़ें स्मूथ हों. And here he has also given the clearance as well. So now we are all set to take off. Alright guys, so now it is the taxi process of the aircraft, where aircraft is moving like very slowly. And ये जो हम जहाँ से गुजर रहे हैं, this is basically the area where all the aircrafts are parked and they are landed over here. And this area is basically called like apron, if you are not aware of. एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट पाकिस्तान की एयरलाइंस के भी नज़र आएंगे एयरक्राफ्ट. एंड उसके अलावा जो इंटरनेशनल एयरलाइंस फ्लाई करती हैं जैसे एयर अरेबिया है, वो भी आपको नज़र आएंगे. आगे जाके आई विल शो यू मोर एयरक्राफ्ट्स. You know, view from a bit far of the Karachi International Airport. So it is really huge if you see from here, and now you can see like these different aircrafts. So basically in Pakistan there is like Serene Air, Pakistan Airline, which is PIA, and then there is Air Blue, and then there is also a new airline which is coming up, which is एयर सियाल, एंड दिस इज़ इट एयरक्राफ्ट. एंड इन्होंने अभी रिसेंटली अपना जो है वो स्टार्ट किया है. एंड हियर इज़ सरीन एयर, ये इनके एयरक्राफ्ट हैं. मुझे आई लव द कलर ऑफ देयर एयरक्राफ्ट्स. इट्स रियली नाइस एंड वेरी यूनिक ऑल्सो. एंड बिहाइंड दैट you can see which is Gary Dinata. Dinata is a big group. I'm sure everyone is aware of it. There behind you can see there is a PIA terminal, cargo terminal, basically from where all the cargos go. And there are like different private jets also available over here. यहाँ पे जिन लोगों के private jets हैं वो भी यहाँ पर parked हैं. So it is really huge. जो टैक्सी थी वो काफ़ी like I think it was around 10 minutes I believe. So I think now the aircraft speed is increasing and we are about to take off finally. Close till I get up. Time is better.
Okay, ji guys, so now we have finally taken off and now we are on cruise. So basically जो seat belt signs हैं वो off तो हो चुके हैं, but I prefer fasten your seat belts all the time during flight. And यहाँ पर basically as they don't offer you free meal, meals का ऐसा हिसाब होता है कि अगर तो आपने अपनी टिकट के साथ ऑर्डर किया हुआ है so आपको मिलता है, but उसके अलावा they have things which you can purchase on board, like this is the menu where there is like chicken tikka sandwich and these are like wraps. Everything is available but you just have to purchase it. So I was not much hungry कि मैं कुछ purchase करती, so I was just enjoying this view. ऑलराइट गाइस, तो जो फ़्लाइट टाइम है वो है ऑलमोस्ट 2 आवर्स, इनफैक्ट लेस देन 2 आवर्स. एंड ये मुझे बेस्ट बात लगती है बिकॉज़ मैं जब भी कराची या मुझे ट्रैवल करना होता है तो इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग फ़्लाइट होती है, तो हमेशा इट्स वेरी शॉर्ट एंड स्मूथ फ़्लाइट. एंड मुझे मेरे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है.
ओके गाइस, सो फाइनली वी हैव लैंडेड एंड मैं जो लैंड हुई हूँ यहाँ पर हुई हूँ 5:55 पर. सो इट वाज लाइक इवनिंग ओवर हियर एंड नाउ मैं एयरक्राफ्ट से उतर रही हूँ एंड ये जो है बसेस हैं यहाँ पर जो कि आपको लेकर जाएंगे. ओके जी गाइस, सो नाउ वी आर फाइनली इन एट शारजा एयरपोर्ट एंड जो शारजा एयरपोर्ट पर आपको यहाँ से एक पीसीआर टेस्ट करना होता है. दैट इज़ मैंडेटरी जब भी आप ट्रैवल करके आ रहे हैं इन शारजा. सो यू हैव टू गो फॉर दैट पीसीआर. सो नाउ आई वाज गोइंग ओवर देयर. ऑलराइट गाइस, सो नाउ ये है करोना टेस्ट. बेसिकली आई एम श्योर आप सब ने, अगर नहीं किसी ने करवाया हुआ, तो इसमें जो पेन तो नहीं आपको होती, बट इसकी जो एक बहुत अजीब सेंसेशन होती है आपकी नॉस्ट्रल्स में, तो जो कि आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी. सो नाउ ये हमारा लगेज था यहाँ पे, बिकॉज वी टुक लिटिल बिट टाइम. तो जो लगेज था वो ऑलरेडी बाहर आ. ओके जी गाइस, सो यहाँ पर जो है मेरी जर्नी एंड होती है. सो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में. सो टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अदर्स अराउंड यू.